Dear students, you are most welcome to this channel. Today we will discuss about development process. Okay, development is a process in which a unique cell called zygote forms itself a complete mature human beings in his or her entire lifespan. This is called development. So we will try to understand what it is telling, what is the meaning of development. Okay, just you think that development, it is telling that development is a process, and in this development process what happens, what it is telling that development is a process. Try to remember that. From that part we will start. Development is a process. Why it is called process? It is called process because it follows certain steps. When any kinds of events or phenomenon passes through some steps, this is known as process. Likewise, development is a process because it follows certain steps. Clear about it? डेभलपमेंट जदि गोटे प्रोसेस हुए कहीं या प्रोसेस बोली कहगला ना ये किसी स्टेप फॉलो करे तेणु करिक आम कौन कह डेभलपमेंट इज ए प्रोसेस बोलिकी कहवा ओके एवं ये प्रोसेस रे कौन सब हो ना इन दिस प्रोसेस ए यूनिक सेल कॉल्ड जाइगोट यू नो अबाउट जाइगोट जाइगोट क्या कह जाए यहाँ निहाती तुम मैंने जानीच ओके तो यही प्रोसेस रे कौन हो ना गोटे जाइगोट जोटा कि भेरी लिटिल गोटे छोटिया सेल जोटा कि आम यूनिक सेल बोलिक कहूँ यूनिक सेलटा कौन हो ना निजको गोटे कंप्लीट मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग हिसाब रे निजको प्रतिष्ठित करुच्ची तैयारी करुच्ची दिस प्रोसेस इज नोन आज डेवलपमेंट ओके एगेन मु आउ थे कहीदे तो डेवलपमेंट हूँ एमतिया गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि गोटे यूनिक सेल जहाँ को आम जाइगोट बोलिक कहूँ बा राइपेन ओव्यूम बोलिक कहूँ बा फर्टिलाइज एग सेल बोलिक कहूँ सी कौन करुच्ची ना तार एंटायर लाइफ स्पान भितर निजको गोटे मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग हिसाब रे निजको प्रस्तुत करुच्ची दिस प्रोसेस इज नोन आज व्हाट दिस इज नोन आज डेवलपमेंट यहाँ को आम डेवलपमेंट बोलिक कहूँ ये बुझी ना आम पिक्चर माध्यम ओके वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द पिक्चर जस्ट लुक एट हियर ओके ये भल भाव टिके देख ये सी कहूँ यही जगार जदि आम देखा जस्ट लुक एट जिते बड़े दिस इज द ओव्यूम यहाँ हूँ गोटे सेल ओके दिस इज कॉल्ड आज ओव्यूम ओके देन ये जिते बड़े स्पर्म सहित अटैच्ड होउची अटैच होला परे ये गोटे यूनिक सेल क्रिएट करुच्ची यहाँ को आम कौन कहवा दिस इज नोन आज जाइगोट कथाटा बुझीगला क्लीयर अबाउट इट इट मीन्स व्हेन ए स्पर्म इज पेनिट्रेट इनसाइड द ओव्यूम ए राइपेन egg cell is formed or fertilized egg cell is formed which is known as we can say this is zygote clear about it मु आउ टिके जूम कर दवा पई चाहिबी ओके जस्ट आई विल ट्राई टू जूम हियर जस्ट लुक एट इट ओके दिस इज व्हाट आमे ताको ओव्यूम बोलिकरी कहूछु एंड ए ओव्यूम जेते बेले स्पर्म संगे एटेज होउची आफ्टर एटेजमेंट गोटे नुआ सेलटे क्रिएट है ओके एवं यही सेलटा को आम कौन कहूँ वी टेल दिस सेल इज नोन आज जाइगोट या विभिन्न प्रकार नामित भी करा वी कैन से इन द डिफरेंट नेम या जाइगोट भी कहुपर किंबा या फर्टिलाइज्ड एग सेल बोलिक कहुपर किंबा वी कैन से इट आज व्हाट दिस इज ऑल्सो नोन आज द fertilized egg cell okay one is zygote second one is fertilized egg cell तो ये दुईटा जिन आम बुझिले तापर सी कहूँ जे डेवलपमेंट प्रोसेसटा एमतिया गोटे प्रोसेस जो थी कि फर्टिलाइज्ड एग सेल बा जाइगोट ये कौन करुच्ची ना इट इज पासिंग स्टेज बाय स्टेज ओके इट इज पासिंग स्टेज बाय स्टेज गोटे पर गोटे स्टेज ये कौन करुच्ची ना आकु आकु जाऊँगी एवं जाइक कौन करुच्ची जस्ट यू लुक दैट दिस इज द इनसाइड द मदर्स ओम ओके ये भी डेभलप है बा इट इज पासिंग टुवर्ड्स दिस वन धीरे 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 पास करी
सी लास्ट रे कौन होउची ना गोटे कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हिसाब रे निज को प्रतिष्ठित करूची बा तैयारी कर दोउची। ओके, जस्ट यू लुक एट दिस वन। ओके, क्लियर अबाउट इट। इट मीन्स जेते बेले ई डेवलपमेंट प्रोसेस रो आमे कथा कहिबा एटा एमतिया गोटे प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच जस्ट ए पिन हेड सेल नोन एज जाइगोट just form itself a complete human being. This is known as development. Okay, जदि क्वेश्चन टा पचारिला कहीं जे व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, तो आमे कहि दे परिबा डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस इन व्हिच ए राइपेड एग सेल और जाइगोट फॉर्म्स इटसेल्फ ए complete matured human beings in its entire lifespan. This is known as development. Okay, ताकू आमे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बोलिकी कही परिबा। ओके, तो कॉमनली कौन हुए डियर स्टूडेंट्स, वी बिलीव दैट व्हाट वी बिलीव डेवलपमेंट मीन्स फिजिकल चेंजेस। आमे जानिले जे डेवलपमेंट होची गोटे प्रोसेस, तो ये डेवलपमेंट आमे साधारण हिसाब से जब बुझीबा तो काहाकू जब आमे पचारिबा एनीबॉडी व्हेन वी विल आस्क टू एनीबॉडी एल्स देन व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, दे मे से डेवलपमेंट मीन्स फिजिकल चेंजेस। ये जिनसा कहीं से मैंने कहती ना, ये जिनसा को आम खाली आखिर देखिपुँ, वी कैन सी इन द नेकेड आई एंड वी ऑब्जर्व इन आवर एनवायरनमेंट। आमर परिवेश भितर आम जो लोक मानू देखुचु, ओके, सोसाइटी विभिन्न प्रकार ह्यूमन बीइंग्स अच्छी से देखुचु, आम डायरेक्टली देखिपुँ फिजिकल चेंजेस को, एंड ऑल दीज फिजिकल चेंजेस आर रेफर्ड एज डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द लेमैन। जड़े अजणा व्यक्तिटे सी यही विषय कह, किंतु ये जिनसा कौन अगेन मुझे तुमको कहीदे। ओके, कॉमनली वी बिलीव दैट डेवलपमेंट मीन्स फिजिकल चेंजेस। ओके, बिकॉज व्हाई दे स्टेटेड दैट बिकॉज they can observe all these physical changes directly in our society, including your younger sister, with your parents, grandparents, in your college friends or other members around with us in our society. एबे क्लियर बुझीगला। जेहेतु ये जिनसा को आम खाली आखिरे देखिपुँ फिजिकल चेंजेस को, तेणु लोक मैंने विश्वास करती जे यहाँ डेवलपमेंट मीन्स गोटे फिजिकल चेंज। आउ ये जिनसा कॉमनली आम आमर निजर फैमिली भितर भाई भौणी को देखिपर से धीरे 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 फिजिकली चेंजेस होती, सो दैट वी कैन से इट इज डेवलपमेंट। बट कौन हो ना, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट इन द ग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी। ओके, बट ये जो आम देखुचु विभिन्न प्रकार फिजिकल चेंजेस गुड़ाक आम डिसाइड कर व्हाट वी कंसीडर इट सेल्फ इट इज द डेवलपमेंट, बट नो, बट it is simply we can say it is growth. Okay, but growth and development are different from each other. You have to remember that growth and development, ये जो physical changes गुड़ा को आम खाली आखिरे देखी पारुचु, तेणु आम भावुचु जे इटा डेवलपमेंट, इटा को ग्रोथ बोलिकी कह जाए इन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज, एंड इट इज टेलिंग दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ग्रोथ आउ डिफरेंट भितर in the psychological context there is a difference between each other. Okay, simply jodi ame kahiba quantitative changes inside the human beings, quantitative changes inside the human beings like the increase of weight, increase of height, then size of the body. Okay, and all these are referred as growth. ये जिनस को आम कौन कहवा ग्रोथ बोलिक आम कहीपर। ओके, ट्राई टू रिमेंबर दैट। ओके, ऑल दोज फिजिकल चेंजेस इनसाइड द ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बॉडी दे आर रेफर्ड एज ग्रोथ। व्हाट वी बिफोर टेलिंग दैट इट वाज डेवलपमेंट। आगु आम कहूले बिकज खाली आखिरे आम देखिपुले, किंतु ये आमको मन रखापी पड़ो जे ये जो फिजिकल चेंजेस गुड़ाक क्वांटिटेटिव चेंजेस गुड़ाक जो आम देखुचु, simply all these quantitative changes means we can measure it. For example, height of a person, weight, okay, then size of the body, all these are called as the physical changes, so we can refer it as growth. So question जदि आसिला परीक्षा रे what do you mean by growth, आम लिखि दे परिबा all the physical changes inside the human body are referred as growth.
एंड एग्जांपल आम नहीं पारिबा द हाइट ऑफ ए पर्सन, वेट ऑफ ए पर्सन, साइज ऑफ ए पर्सन, ओके, बॉडी साइज ऑफ ए पर्सन एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ. ओके, and in the other hand all the qualitative changes means what? आमे देखिले क्वांटिटेटिव चेंजेस मीन्स आमे ताको मेजर करि पारुछु, जोटा कि आमे माने मेजरेबल थिंग्स आमे डायरेक्टली आमे मेजर करि परिबा. फॉर एग्जांपल हाइट को हम जदि मेजर करिबा 5 फुट 4 इंच, 5 फीट 4 इंचेस, ओके, एंड 2 इंच 5, लाइकवाइज सीएम मीटर ये भाया जो आम कैलकुलेशन करूँ ऑल दीज आर कॉल्ड एज मेजरेबल. एंड इन द अदर हैंड सी कहूँ जे जेतिकी भी क्वालिटेटिव चेंजेस अच्छी लाइक थिंकिंग, देन लर्निंग, परसेप्शन एटसेट्रा, दे आर रेफर्ड एज डेवलपमेंट. कथाटा बुझीगला क्लीयरली. तो फिजिकल चेंजेस गुड़ा को आम ग्रोथ बोलिकी कहले, जोटा कि आम सिंपली क्वांटिटेटिव चेंज बोलिकी भाविले एवं चिंता कले, एवं दिस इज परफेक्ट एंड राइट ऑल्सो. एंड इन द अदर हैंड द क्वालिटेटिव चेंजेस लाइक थिंकिंग, लर्निंग, परसेप्शन एटसेट्रा रेफर टू डेवलपमेंट. ओके, ऑल दीज आर कॉल्ड एज डेवलपमेंट. या डेवलपमेंट बोलिकी कह जाए. जदि ताको आमे वन सेंटेंस रे कहिबा, ओके, इन वन सेंटेंस इट कैन बी सेड दैट कौन बोलिकी कहि परिबा, ऑल द साइकोलॉजिकल चेंजेस और क्वालिटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड डेवलपमेंट. ओके, जेतिकी भी क्वालिटेटिव चेंजेस आमर बॉडी भितर हुए बा ह्यूमन बीइंग भितर हुए ताको आमे कौन कहबा, वी कैन से इट इज डेवलपमेंट. ओके, मीन्स साइकोलॉजिकल चेंजेस को अदर वर्ड आमे क्वालिटेटिव चेंजेस बोलिकी मध्य कहि पारिले. ओके, मीन्स द साइकोलॉजिकल चेंजेस अदरवाइज नोन एज qualitative changes. Okay, so all the psychological or qualitative changes are referred to development. And in the other hand सी कहूँ कौन called as development, and the physical changes or qualitative changes are called as growth. Okay, clear बुझीगला एबे? आई थिंक सो निहाती बुझी पारुथबो. ओके, बुझीगला. तो सिंपल हिसाब से गोटे छोटिया सेंटेंस रे कहिबा जे व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, we can say that the physical changes or quantitative changes of human beings are referred as growth, and on the other hand the psychological changes or the qualitative changes of the human being are referred as development. Okay, what is the difference between growth and development रे बुझीगला. एठी हम नै जिबा जेतिकी क्वांटिटेटिव चेंजेस बा फिजिकल चेंजेस अच्छी या को आमे ग्रोथ बोलिकी कहबा, बा एठी साइकोलॉजिकल चेंजेस और आमे जोटा कि आमे क्वालिटेटिव चेंजेस बोलिकी कहूछु, ऑल दीज आर रेफर्ड एज डेवलपमेंट. ओके, तो ये जो डेवलपमेंट जिनसटा, ओके, कोठु आरंभ हुए, यू नो दैट व्हेन द डेवलपमेंट स्टार्ट्स, एवरीबॉडी नोज, एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट यू नो मस्ट. ओके, from the moment of conception life starts and development also starts. जो conception आरंभ हैला सेइठू आमर कौन हैला ना डेवलपमेंट स्टार्ट हो गला बा गोटे जीवन आरंभ हो गला. एंड फ्रॉम द मोमेंट ऑफ conception till death, okay, from the moment of conception to till death we do not change physically, but we also change in the way we think, we use language, we behave with others and develop social relationship. तो सी कहूँ कौन जो आमर कनसेप्शनटा है, ये कनसेप्शन ठू केवल आमर फिजिकल चेंजेस हुए ना बा शारीरिक परिवर्तन हुए ना, ता सांगे आहरी भी बहुत गुड़े जिनस परिवर्तन हुए. जेमितिक फॉर एग्जांपल फिजिकल चेंजेस रे आमे देखि पारिले, ओके, आमर जोटा बॉडी पर्सन सब चेंज है, आम खाली आखिर देखी दौचु बोलिक आम जानी पकाऊँ, किंतु आहरी भी किसी आमर परिवर्तन हुए. फॉर एग्जांपल द वे वी थिंक, आम जो चिंता करूँ से भी परिवर्तन आसे. ओके, सो मेनी चेंजेस वी कैन फाइंड. देन लैंग्वेज वी यूज,
आमे जो लैंग्वेज सब व्यवहार करूँ छोट बेले जमी लैंग्वेज व्यवहार करूँ बड़ होला से लैंग्वेजटा धीरे धीरे परिवर्तन हो ग्रामाटिकल एरर गुड़ाक धीरे 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 कौन हो ओमिट हो बढ़िया लैंग्वेज भल भाषा आम कथा कही पार्टी ओके एंड वी बिहेव विथ अदर्स आम जमिया व्यवहार करूँ छोट बेले से धीरे धीरे कौन हो चेंज होकर गोटे मेच्योर्ड हिसाब से आम कथबार्ता करूँ एंड बिहेव करूँ एक्ट रिएक्ट करूँ ओके एंड इन द अदर हैंड वी ऑल्सो डेवलप सोशल रिलेशनशिप छोट बेले आमर जी सोशल रिलेशनशिप थिला बा सामाजिक संपर्क थिला सेटा धीरे धीरे कौन ना बदले बा परिवर्तन हुए बा किछि किछि नुआ सांग आम पाऊ फ्रॉम आवर सोसाइटी ओके सो नाउ वी मे कंक्लूड दैट फ्रॉम वेरी सिंपली नॉट ओनली वी फिजिकली चेंज थ्रू आउट आवर लाइफ स्पान वी ऑल्सो चेंजेस मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आस्पेक्ट लाइक थिंकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज and behave with others and communicate with other individuals or social members okay इटा जमतिया फॉर एग्जांपल एठू जदि आमे आरंभ करिबा जस्ट लुक एट दिस वन ओके इटा हला कंसेप्शन पीरियड परे जस्ट दिस इज नोन एज प्रेगनेंसी रु आरंभ हेइगिरी मनुष्यटा कोन कला वार्धक्य अवस्था पर्यंत गति कला एवं लास्ट से कोन करछि दिस इज द स्टेज ऑफ डेथ ओके दिस इज द स्टेज ऑफ डेथ एवं एठू एई पर्यंत ओके फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू टिल डेथ आमर केवल फिजिकल परिवर्तन हुए ना ता सांगे बहुत गुड़े परिवर्तन हुए जोटा आम डिस्कस कले लैंग्वेज रे परिवर्तन होउची आमर थिंकिंग रे परिवर्तन होउची आमर बिहेव रे परिवर्तन होउची एवं आम जो सोशल रिलेशन क्रिएट करूछु ताथरे मध्ये परिवर्तन आम जानि परिबा ओके एंड ए जिंस सब हुए ओके नाउ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ओके मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट को आम देखा तो इन सिंपल वर्ड डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस मु आगु भी कही तुम मानू डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल ग्रोज एंड चेंज थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पान तो डेवलपमेंट एमती गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि जड़े इंडिविजुअल बा से यूनिक सेलटा कौन होची ना ग्रो करने सहित चेंजेस थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पान तार लाइफ स्पान एंटायर लाइफ स्पान भितर ग्रो करने सहित से कौन कर निजको परिवर्तन करी जाउछ ओके स्टेज बाय स्टेज दिस चेंज में डिफाइंड आज ये जो चेंजटा होची बा से परिवर्तनटा होची ये परिवर्तनटा को टाइप रो ना दिस चेंजेस may be defined as a progressive series of changes कौन तार माने आम बुझा नेक्स्ट टाइम रे ओके द चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस और डेवलपमेंटल पीरियड द चेंजेस आर सिंपली प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली as well as coherent okay and it is telling that which leads forward to goal of maturity okay ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस टा होची तार भी गोटे निर्दिष्ट लक्ष्यटे अछि okay it has a definite goal and what is the goal of the development process the main goal of the development is to get complete maturity पाइबा होची डेवलपमेंट रो गोल ये जो प्रोसेस टा हमरो हला डेवलपमेंट गुटे प्रोसेस ए प्रोसेस रो मेन गोलटा होची कौन ना अचीवमेंट ऑफ मैच्योरिटी तो ये प्रोसेसटा होची कौन ना दिस प्रोसेस इज ऑफ प्रोग्रेसिव इन नेचर प्रोग्रेसिव माने कौन एंड ऑर्डरली as well as दिस इज कोहेरेंट एटा में बुझिबा वर्तमान ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरली एंड कोहेरेंट ये जिनसटा को हमें बुझी नबा एबे ओके सो लुक एट हियर एठू जो आरंभ हैला ए पर्यंत दिस इज द डेक्लाइन ऑल्सो एठी ग्रो एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली इट इज डेक्लाइन इट इज द स्टेज तो एठू ए पर्यंत जो हैला हमर परिवर्तनटा हैला ओके ये परिवर्तनटा होची से कहूची इट इज प्रोग्रेसिव as well as orderly okay as well as orderly and coherent बोली कि कहूची ये जिनसटा में जानिबा तो डेवलपमेंट प्रोसेस is a progressive development process is orderly and development process is coherent ये तीन जिन आम मन रखा ये जो डेवलपमेंट प्रोसेसटा हूँ कौन ना गोटे प्रोग्रेसिव प्रोसेस कोहेरेंट प्रोसेस एंड आ गोटे हूँ कौन ना दिस इज नोन एज योर ऑर्डरली प्रोसेस तो व्हाट इज प्रोग्रेसिव व्हाट इज ऑर्डरली एंड व्हाट इज योर कोहेरेंट बर्तमान आम देखा ओके The term progressive signifies that the changes are directional. ये जो प्रोग्रेसिव
टर्मटा को आम नेले जे आम कहले डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव रो माने होची इट सिग्निफाई दैट चेंजेस आर डायरेक्शनल। डायरेक्शनल गोटे आमर जमिया विभिन्न प्रकार जदि आम देखा डायरेक्टर मान जमी डायरेक्शन दिखती निजर ओन थियोरी को लेकिन जिते से कौन मूवी बनाती सीरियल बनाती लाइक वाइज आमर जो डेवलपमेंट प्रोसेसटा होची प्रोग्रेसिव मीन्स इट इज डायरेक्शनल। माने जदि सी कनसेप्शन स्टार्ट कला ताहले एई डायरेक्शन रे से जाइकरी मैच्योरिटीटा से जगह पाइबो। दिस इज डायरेक्शनल। ओके एंड लीडिंग फॉरवर्ड मीन्स व्हाट? ओके एंड लीडिंग फॉरवर्ड एंड नॉट टू बैकवर्ड। ए जिनसटा बुझी नबा आमे व्हाट इज लीडिंग फॉरवर्ड एंड नॉट टू बैकवर्ड। ओके ये देखी नबा जस्ट थिंक दैट जदि जड़े बेबी यही जगह पहुँची गला आफ्टर बार्थ ओके ताकू वर्तमान यही डायरेक्शन रे जिबार अछि। ओके जदि फॉर एग्जांपल थिंक दैट दिस इज द स्टेज यही स्टेज रे जदि से पहुँची गला ही और सी कैन नॉट गो बैक पछको आउ से फेरी पारिबो नाही। दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्शनल। एटा हला डायरेक्शनल एंड गो फॉरवर्ड नॉट टू बैकवर्ड। ओके क्लियर बुझीला एबे तेणु करके ताकू कहला प्रोग्रेसिव रो माने मन रख पिला माने प्रोग्रेसिव मीन्स गो फॉरवर्ड नॉट टू बैकवर्ड एज वेल एज डायरेक्शनल। गोटे निर्दिष्ट डायरेक्शन रे आगो को आगो बढ़ी गिर जीवो नॉट टू बैकवर्ड। ओके दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव। एंड another thing it is telling that the term orderly and coherent suggests that there is a definite relationship between different stages in the developmental sequence। एठी हमें आउ थरे मु देखे दउची पिला माने एटा होची कोन दिस इज नोन एज डेवलपमेंटल सीक्वेंस। एवं ए डेवलपमेंटल सीक्वेंस रे सी कहूची कोहेरेंट एंड ऑर्डरली। ओके ऑर्डरली एंड कोहेरेंट रो माने हला एठी कोन होची ना एई जो स्टेजटा अछि दिस इज द स्टेज। ओके एई स्टेज संगे रे एई स्टेज रो संपर्क अछि देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन ईच अदर दिस इज नोन एज कोहेरेंट दे आर इंटर कोरिलेटेड। ओके सो देयर इज ए डेफिनाइट रिलेशनशिप जेहेतु से माने इंटर कोरिलेटेड हेकरी अछंती तेणु ताको भितरे गुटे रिलेशनटे अच्छी डेवलपमेंटल सीक्वेंस भितरे। ओके एंड आउ गुटे जिनस से कहूची कोन ना ईच चेंजेस और ईच चेंज इज डेवलपमेंट अपॉन व्हाट प्रोसीडेड इट एंड इट इन टर्न विल डिटरमाइन व्हाट विल कम आफ्टर। यार माने होची या सिंपली जब हमें बुझीबा इफ the first step of the development period is go well then next step will also be go well। जदि पहला स्टेपटा डेवलपमेंट रो भलो हिसाब रे हेइची ताहले दुई नंबर स्टेप रो डेवलपमेंट जो अछि सेटा मध्य भलो भाव रे हेइ परिबो अदरवाइज सेटा नेगेटिव इंपैक्ट पड़िबो। ओके तेणु ए जो डेवलपमेंटटा अछि ताको हमें समराइज कर देई परिबा। ओके The development may be summarized as consisting of progressive, coherent and orderly changes। First jinso try to remember that if we will summarize from all these what we studied now and discussed here, development can be stated that it is consist of progressive, coherent and orderly changes। Means एटा होची progressive रो माने हमें बुझी पारिले प्रोग्रेसिव माने हला गो फॉरवर्ड नॉट टू बैकवर्ड एंड कोहेरेंट मीन्स देयर इज ए डेफिनाइट रिलेशनशिप बिटवीन एवरी स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट पीरियड एंड ऑर्डरली मीन्स इट इज द डायरेक्शनल। ओके क्लियर अबाउट दैट मीन्स डेवलपमेंट एमितिया गोटे प्रोसेस जोटा कि द प्रोसेस इनक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एंड कोहेरेंट एंड ऑर्डरली एज वेल एज इट इज आल्सो कोहेरेंट सीरीज बहुत गुडे परिवर्तन आमे देखि परिबा तारि भितरे। ओके देन चेंजेस व्हिच हैव ए डेफिनाइट डायरेक्शन एंड लीडिंग फॉरवर्ड। तो ये जिनसटा मु तुमको कहली चेंजेस व्हिच हैव ए डेफिनाइट डायरेक्शन तार गोटे निर्दिष्ट डायरेक्शन रही एवं लीडिंग फॉरवर्ड आकु आकु से नहींकरी जीव नॉट टू बैकवर्ड ये आड़े आसीपर ना। ओके क्लियर देन नंबर थर्ड चेंजेस आर नॉट हापाजार्ड। ये जो चेंजेस गुड़ाक होउची हमरो डेवलपमेंट प्रोसेस रे ए डेवलपमेंट प्रोसेस रे होउथिबा जतिकि भी परिवर्तन होउची ऑल दीज आर प्री डिटरमाइंड नॉट हापाजार्ड। हापाजार्ड रो माने कोन ना भाबो कि तमे इन्फांसी स्टेज रु थाई करी डायरेक्ट तमे ओल्ड एज को जाई परिबो नाही। ओके बिकॉज इट इज द सिस्टमैटिक। हापाजार्ड मीन्स कोन इट इज नॉट सिस्टमैटिक। सो द
changes are not haphazard and there exists a definite relationship between what exists and what will come after. କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଯେ ପହିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ୟା ସାଙ୍ଗରେ 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ 2, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ୟାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କଥାଟା ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ଟା 2 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ 1 ନମ୍ବରଟା 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ट्रांसफर हो पार ना। फास्ट ऑफ ऑल ये पहला स्टेज, तापर या फॉलो करिवो, देन इटा सरीला पुणी थर्ड स्टेज को जीवो। क्लियर अबाउट? ओके, बुझीगला? देन आउ गोटे जिन से कहूँ, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। ये जो डेवलपमेंट बोलिक आम कहूँ यहाँ गोटे ह्यूज प्रोसेस। ओके, एंड इन दिस ह्यूज प्रोसेस पर्टिकुलरली व्हाट हैपेंस, डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड एंड इंटरप्ले, ये जो इन्फ्लुएंस माने प्रभावित होगा बोलिक आम कहूँ, मीन्स ये डेवलपमेंट प्रोसेसटा क्या द्वारा प्रभावित हुए, जेहेतु तांको भितरे बहुत गुड़े प्रोसेस रही। जस्ट लुक दैट हियर। ओके, मुझे जूम कर दूची, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, जस्ट लुक एट हियर। तो ये जदि आम देखा, ओके, तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस अच्छी, ये डेवलपमेंट प्रोसेस इज ए ह्यूज प्रोसेस and big process also. It includes many different aspects, तार डायमेंशन टा बहुत बड़। ओके, आम जमी आम कहूँ आम थिंकिंग रे परिवर्तन होची, आमर कहवा शैली रे भी परिवर्तन होची, आमर इमोशन रे भी परिवर्तन होची। ओके, आमर लर्निंग रे भी परिवर्तन होची। तो बहुत गुड़े भास्ट जिनसर आमर परिवर्तन होची, ताकू जदि समप आम करि परिबा, इट इनक्लूड्स 4 डिफरेंट डायमेंशंस। ओके, इट इनक्लूड्स 4 डिफरेंट डायमेंशन। फॉर एग्जांपल ये आम ना फिजिकल आस्पेक्ट, जोटा कि आम डायरेक्ट देखिपुँ। देन सोशल आस्पेक्ट भी आम परिवर्तन होची, एज वेल एज कॉग्निटिव आमर जो मेंटल एक्टिविटी सब अच्छी तार भी परिवर्तन होची। एंड अनदर थिंग इट इज टेलिंग दैट द इमोशनल फैक्टर्स, आमर जो इमोशन फैक्टर सब रही, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज बोथ आर इंटरप्ले एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, देन डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स, जोटा कि बर्तमान फिजियोलॉजिकल बेसिस को जीवा, जोटा कि आम कहूँ फिजिकल चेंजेस। ओके, डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, चिल्ड्रेन हैव मैक्सिमम सिमिलारिटीज इन द हाइट अपीयरेंस। ओके, जेमतिया कि बापा आ माँ चेहराटा निहाती ताकर निजर संतान मान पाखु आसी था, तो से जो अपीयरेंस ताकर हाइट, ओके, प्राय सिमिलार देखा मिले। तेणु सी कहूँ डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड, ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस रे जेहेतु ये गोटे इनहेरिटेड बा जीन फैक्टरटे रोचे एवं से ट्रांसमिट होची एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, तेणु करी ये जो चिल्ड्रेन रो सिमिलारिटीज पेरेंट्स मान सांगे आसी जाए। जमतिया कि से हाइट, से आउ कौन ना ऑलवेज द अपीयरेंस ऑल्सो, द वेट, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स डेवलपमेंट एटसेट्रा ऑल पॉइंट टुवर्ड्स द रोल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो जी जिन आम कहले, यू मे टेल अबाउट द वेट, देन ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स डेवलपमेंट, यही सब गुड़ा कहूँ आम फिजियोलॉजिकल चेंजेस बा फिजियोलॉजिकल बा शारीरिक परिवर्तन, ये रिलेटेड होकर अच्छी क्या सांगे, ग्रोथ सांगे, एंड इट इज ऑल्सो इनवॉल्व इनसाइड द डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, तापर नेक्स्ट आसला कॉग्निटिव। ओके, कॉग्निटिव जदि आम कहवा, द रोल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस इन द डेवलपमेंट रिलेट टू मेंटल एक्टिविटीज, आमर जी सब मेंटल एक्टिविटीज अच्छी, ओके, एसोसिएटेड विथ द प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड एक्सपीरियंसिंग। आम जिते धीरे धीरे बढ़ुचु समाज रे बढ़ला बेले आम किसी नॉलेज एक्वायर करूचु, ओके, एंड एक्सपीरियंस किसी एक्सपीरियंस करूचु, या सांगे मेंटल एक्टिविटीज बा कॉग्निटिव आस्पेक्ट इनक्लूड होकर अच्छी। तो दुईटा आस्पेक्ट आम देखिले, वन इज फिजिकल आस्पेक्ट जोटा कि इनहेरिटेड होती पेरेंट्स मान पाखु चिल्ड्रेन मान पाखु, एवं 2 नंबर हूँ आम जिते सोसाइटी रे लोक मान सहित मिसुचु किसी नॉलेज एक्वायर करूचु, से बेले आमर कॉग्निटिव प्रोसेस कौन होती डेवलपमेंट सांगे एसोसिएट होकर अच्छी। ओके, नोइंग एंड एक्सपीरियंसिंग सच एज थॉट, परसेप्शन, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर द कॉग्निटिव एक्टिविटीज वी एक्सपीरियंस, वी एक्वायर। ओके, then socio-emotional, the third dimension, it is also involved in developmental process.
Okay, socio emotional process that influence development refers to changes in an individual's interactions with other people. ये जो सोशियो इमोशनल प्रोसेस आम कहूँ ये इनफ्लुएंस बा प्रभावित करुँच डेवलपमेंटल प्रोसेस रे जोटा कि सेटा को आम कौन कहूँ सोशियो इमोशनल मीन्स चेंजेस इन इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विथ अदर पीपुल दिस इज नोन आज सोशियो इमोशनल क्या कहगला ना आम जो इंडिविजुअल मान सहित इंटरेक्शन रे आसुचु बा अन्य लोक मान सांगे आसुचु जो आमर इंटरेक्शन है टाइम रे आमर कौन परिवर्तन होउची ना आमर इमोशन प्रोसेसटा जो प्रभावित होउची दिस इज नोन आज सोशियो इमोशनल प्रोसेस ओके एंड इट ऑल्सो चेंज इन इमोशन एंड पर्सनालिटी आमर पर्सनालिटी भी किसी परिवर्तन आसवा सहित आमर इमोशन रे किसी परिवर्तन आसी था ड्यू टू इंटरेक्शन विथ अदर पीपुल व्हाट इज कॉल्ड एज सोशियो इमोशनल प्रोसेस ओके दीज प्रोसेस इन्फ्लुएंस चेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज ए होल थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ ये जी भी आम परिवर्तन देखिले फिजिकल चेंजेस को ओके इट इन्वॉल्व्स इन डेवलपमेंटल प्रोसेस okay then socio emotional process and cognitive process okay all these processes are interrelated to each other and they influence for example जदि socio emotional रो कथा कहवा okay जदि बापा माँ पेरेंटिंग प्रॉपर न करिले गोटे चाइल्डहुड पीरियड रे ताहले से कॉन्सिक्वेंस कौन हम पर्सनालिटी रे निहाती माल एडजस्टमेंट हो ओके सो दैट इट इन्फ्लुएंस ओके then there are so many definitions are there given by our developmental psychologist okay तो according to Horlock कहउचंदी कौन डेवलपमेंट मीन्स ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट occurs in an orderly predictable pattern as a result of maturation and experience सिंपली से जिनसटा को मैं कहले माने ये जो एटा हूँ गोटे प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस डेवलपमेंट हूँ गोटे प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एवं इटा केमितिया हुए ना इट ऑकर्स आज ड्यू टू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस मैच्योरेशन द्वारा एवं एक्सपीरियंस द्वारा कौन हुए ना आमर जो परिवर्तनटा हुए प्रोग्रेसिव चेंजेस हुए बा गो फॉरवर्ड हुए दिस चेंजेस इज नोन आज डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू हॉरलॉक वन इम्पोर्टेंट व्हाट डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ओके देन इन वेबस्टर्स डिक्शनरी जदि वेबस्टर डिक्शनरी आम देखा सी कौच द सीरीज ऑफ चेंजेस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक स्टेज टू मैच्योरिटी जो वेबस्टर डिक्शनरीटा कहूँ जे गोटे डेवलपमेंट मान है सीरीज ऑफ चेंजेस कौटू आरंभ है ना एम्ब्रियोनिक स्टेज रू एम्ब्रियोनिक स्टेज रू आरंभ करी मैच्योरिटी पर्यंत जो चेंजेस गुड़ाक है सीरीज ऑफ चेंजेस नॉट ओनली सिंगल चेंजेस देयर आर सीरीज ऑफ चेंजेस आर देयर इन डेवलपमेंटल प्रोसेस ओके ये जो चेंजेस गुड़ाक हूँ अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी दिस इज डेवलपमेंट ओके सो development includes all those psychological changes that takes place in the functions and activities of different organs of an individual तो यही जगह से कहूँ कौन जी भी तेणु करी भी साइकोलॉजिकल सब रही ओके सो डेवलपमेंट इनक्लूड्स जस्ट सो डेवलपमेंट इनक्लूड्स ऑल दोज साइकोलॉजिकल चेंजेस जी भी आम साइकोलॉजिकल चेंजेस रही से सब डेवलपमेंट इनक्लूड करुच्ची ओके एंड डिफरेंट एक्टिविटीज आर ऑल्सो इनवॉल्व हियर दस डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज इन ग्रोथ एंड कैपेसिटी ओवर टाइम ड्यू टू फंक्शन ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विथ द एनवायरनमेंट सिंपल जिनस तेणु करी से कौच डेवलपमेंट हूँ गोटे प्रोसेस ऑफ चेंज परिवर्तन प्रोसेसटा डेवलपमेंट हूँ गोटे परिवर्तन प्रोसेस आम जोटा आगु देखुले कौ परिवर्तन होता प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस नंबर वन प्रोग्रेसिव सीरीज मान तो मुझे सेकेंड थिंग हूँ कौन ना ऑर्डरली एंड कोहेरेंट ऑल दीज आर द प्रोसेसेस इनवॉल्व हियर तेणु सी कौच ये जो प्रोग्रेसिव प्रोसेस ऑफ चेंज ये कौन हो ना ग्रोथ एंड कैपेसिटी कौन हो धीरे 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 ग्रो करुच्ची अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस एंड एट द टाइम ऑफ
मैच्यूरेशन ड्यू टू मैच्यूरेशन आउ इंटरेक्शन विथ द एनवायरनमेंट परिवेश सहित आम जो इंटरेक्ट होचु एवं धीरे धीरे आम जो बायोलॉजिकल प्रोसेस अच्छी मैच्यूरेशन प्रोसेस अच्छी दुईटा जाकर कॉम्बिनेशन रे जो आम परिवर्तनटा हो जाऊँगी जो प्रोसेस रे परिवर्तन हो जाऊँगी दिस इज नोन एज डेवलपमेंटल प्रोसेस और डेवलपमेंट ओके बर्तमान आम देखी ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओके सो डियर स्टूडेंट्स growth and development are similar words but different from each other though it is not possible to separate them totally सी कहूँ जे ग्रोथ आउ डेवलपमेंट अलग अलग जिनस आम ताकू सिमिलार भाया यूज करूँ जदिव आम सिमिलार भाया यूज करूँ कहीं आमको सिमिलार भाया लगे किंतु भितर डेफिनाइट रिलेशनशिप अच्छी जदिव आम ताकू टोटाली एक्सटिंग्विश करें से अंगांगी भाव में जड़ित okay they are interrelated to each other growth and development so it is quite difficult to differentiate totally आम संपूर्ण भाव में ताकू differentiate बा भिन्नकरण करि परिबा नाही okay तो development is a whole process try to remember that development is a whole process which includes growth of the body as well as growth of various aspects of child's personality for example the physical emotional social and cognitive development okay so dear students एठी तुम मान को कहि दउची जे डेवलपमेंट होची गोटे माने एंटायर होल प्रोसेस एवं ये होल प्रोसेस जहा कि काहा को इंक्लूड करूची इट इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ ऑफ द बॉडी रो ग्रोथ को इंक्लूड करबा सहित as well as growth of various aspect of the child's personality ये जो child's रो पर्सनालिटी ग्रो हबारे जो जो सब इंग्रेडिएंट्स रही से ही सब इंग्रेडिएंट्स मध्य ये कंबाइन करूची बा इंटर रिलेटेड करूची ओके फॉर एग्जांपल द फिजिकल एस्पेक्ट ओके देन इमोशनल एस्पेक्ट सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल दीज आर इंक्लूड्स इन डेवलपमेंट पार्ट ओके जदि एटा ह्यूज हुए या भितर फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी ओके देन इमोशन भी अच्छी देन पर्सनालिटी भी अच्छी ओके आउ कौन अच्छी सोशल प्रोसेस भी जोटा सोशियो इमोशनल प्रोसेस बोलिक आम कहूँ देन कॉग्निटिव प्रोसेस इट मीन्स इफ इट इज डेवलपमेंट इट इज ए होल प्रोसेस इट इंक्लूड्स all those aspects which makes the personality and maturity of an individual as a complete mature human beings okay and another thing development is a progressive change the child undergoes which increases the physical social mental and इमोशनल कैपेसिटीज ऑफ द चाइल्ड तो डेवलपमेंटल होची कौन ये डेवलपमेंट होची गोटे प्रोग्रेसिव चेंज जोटा कि धीरे धीरे तार फिजिकल सोशल मेंटल एंड इमोशनल कैपेसिटी धीरे धीरे ग्रो करूची ओके दिस इज डेवलपमेंट ग्रोथ रेफर्स टू क्लियरली मेजरेबल और स्पेसिफिक चेंजेस व्हिच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर ओके तो ये जगह रे जति भी मेजरेबल एस्पेक्ट रही ताकू आम ग्रोथ बोलिक कहवा ओके ऑल द मेजरेबल एस्पेक्ट्स and specific change we can be quantitative in nature all these are we can say that it is growth एटा मु आगु तो मान को कहिची ओके ताकू आ डिस्क्राइब करबा किछि मु अधिका मने करूनी नेक्स्ट हला डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू qualitative changes unfolding or increasing in capacity it is not as observed as growth मान सी कहूँ जे डेवलपमेंट एमतीया गोटे प्रोसेस जोटा कि क्वालिटेटिव प्रोसेस आम क्वालिटेटिव प्रोसेस टाको खाली आखिरे देखिपर ना जमी कि आम ग्रोथ टाको देखिपे बिकज ग्रोथ मे बी ऑब्जर्वेबल डायरेक्टली ओके वर्तमान जो पिला माने तो माने पचार सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ परीक्षा भी आसे ओके आम देखी ना कौन कौन डिफरेंस अच्छी if the question is asking that define the difference between growth and development आम कौन लिखा ओके जनरल ये 3 मार्क पाई आसे ओके सो जस्ट लुक एट ओके ग्रोथ रेफर्स टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस एटा मु तुमको कहूँ ग्रोथ रेफर्स टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस बा जति फिजियोलॉजिकल चेंजेस अच्छी आम बॉडी भितर हुए ऑल दीज आर रेफर्ड एज ग्रोथ ओके and development refers to overall changes in the individual overall changes means तारि भितर संपूर्ण भाव में परिवर्तन जति सब आम एक्टिविटीज अच्छी ओके सबू आस्पेक्ट रो ओवरऑल आस्पेक्ट को से नहीं जाऊँगी इट मीन्स
ओवरऑल चेंज आमर थिंकिंग रे चेंज होची, इमोशन रे चेंज होची, पर्सनालिटी रे चेंज होची, परसेप्शन रे चेंज होची, ऑल दीज एस्पेक्ट्स combinedly include in development process. Okay, it involves changes in an orderly and coherent type towards the goal of maturity. ये हला difference number 1. Okay, growth हला गोटे physiological process, किंतु development it includes overall changes inside the body of the human beings. Okay, ये हला number 1. Then number 2, changes in the quantitative रेस्पेक्ट इज टर्म आज ग्रोथ एटा मुझे कहीदे तुमको सेकेंड डिफरेंस आउ एटा होची क्वालिटेटिव चेंजेस. ओके, द डेवलपमेंट चेंज इन द क्वालिटी एलोंग विथ द क्वांटिटेटिव चेंजेस मीन्स दुईटा जाकर कॉम्बिनेशन रे ये केवल होची क्वांटिटेटिव कोटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होची बोथ द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंज रेफर्स टू द डेवलपमेंट. ओके, ग्रोथ देन नेक्स्ट होची ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. ग्रोथ स्टॉप आफ्टर मैच्यूरेशन. ये पिला माने मन रख ग्रोथटा डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. आमर लाइफ जो एंटायर लाइफटा अच्छी एंटायर लाइफ भितर ग्रोथटा सबुदिन पर्यंत मरिया पर्यंत कंटिन्यू करे ना, यहाँ आरेस्ट हो जाए. ओके, केतेबेले आरेस्ट हुए? इट स्टॉप्स और आरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्यूरेशन. ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस अच्छी आम जो मैच्यूरेशन प्रोसेस अच्छी से मैच्यूरेशन प्रोसेसटा जो कंप्लीट हो जाए आफ्टर मैच्यूरेशन then there is no growth. आउ जमि कि फॉर एग्जांपल हाइट. ओके, जड़े आमर 25 वर्ष बयस तार जी हाइट हवा कथा से हाइट हो सारा से व्यक्ति जन को आपको हाइटा तार बढ़े ना, से आरेस्ट हो जाए से ग्रोथटा स्टॉप हो जाए. इट मीन्स द ग्रोथ इज आरेस्टेड एट द टाइम ऑफ what maturation. When there is a perfect maturation in the human being, there is no any growth inside its body. Okay, इन द अदर हैंड जदि यहाँ देखा या संगे जब आम या कंपेयर करवा से कौच डेवलपमेंट कंटिन्यूज, डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ स्पान. ओके, एंड डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव थ्रू आउट द लाइफ. कथाटा बुझीगला, यहाँ आरेस्ट हो जाए स्टॉप हो जाए, ये किंतु लाइफ लंग मरिया पर्यंत कंटिन्यू करे. ओके, यहाँ हूँ क्वालिटेटिव चेंजेस, सॉरी इट इज द जदि यहाँ ग्रोथ हुए ग्रोथटा हूँ क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड जदि यहाँ डेवलपमेंट हुए यहाँ दुईटा जाक कंप्लीट करी नौची सांगे मीन्स यार भितर क्वांटिटेटिव भी अच्छी आउ क्वालिटेटिव भी अच्छी. ओके, क्लियर. देन नेक्स्ट ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल. डियर स्टूडेंट्स, आमे जानिचु जो आमर सेल डिवीजन सब हुए जमि आमर जानी एम्ब्रियोनिक स्टेज रे कौन हुए ना जो जाइगोटा क्रिएट होता है. जाइगोटा हूँ गोटे यूनिक सेल. ये यूनिक सेलटा कौन हुए ना सेलटा धीरे धीरे डिवीजन हुए. ओके, तो ये जो सेल डिवीजन है ये सेल डिवीजन को आम ग्रोथ बोलिकी कहवा कहीं सी कहूँ जे ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. मल्टीप्लिकेशन मीन्स व्हाट माने पहला गोटे सेल थिला ताकू मल्टीप्लिकेशन हो गला से दुई भाग हो गला. ओके, दुई खंड हो गला. देन दुईटा 4 हो गला, 4टा 8 हो गला. ये भाया करी जो होची सेलटा डिवीजन होची दिस इज नोन एज ग्रोथ. मीन्स आम सिंपली कहीदे पारिबा ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल. माने सेल बा कोषर मल्टीप्लिकेशन द्वारा कौन हुए ना ग्रोथटा संभव हुए. तापरे डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू बोथ मैच्यूरेशन एंड इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट. ये केमती आउची आउ ये केमती आउची ग्रोथटा आउची सेल मानकर मल्टीप्लिकेशन रे. ओके, ग्रोथ होची सेल मानकर मल्टीप्लिकेशन रे किंतु डेवलपमेंट होची कौन ना मैच्यूरेशन आउ इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट. ओके, डेवलपमेंट अकर्स by the combination of maturation as well as environmental influence. Okay, the growth occurs only on multiplication of the cell. Okay, then growth is cellular. जेहेतु ये सेल डिवीजन हेले आमर कौन हो ग्रोथ आसुची तेणु आम ताकू कौन कही पारिबा सेल इज ग्रोथ इज सेल्युलर एंड डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी प्रोसेसेस.
बहुत गुड़े प्रोसेस नहीं एका सांगे सी जाऊँगी तेणु ताकू आम कौन कहीपर डेभलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोटे ऑर्गेनाइजेशनल वे सी धीरे 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 आगू जाऊँगी जेहेतु तारी भितर बहुत गुड़े प्रोसेस रही तारी भितर मेमोरी अच्छी इमोशन अच्छी थिंकिंग अच्छी सोशल परसेप्शन अच्छी ओके से कंबाइन करके सी ऑर्गेनाइजेशनल वे नौथबार आम डेभलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल बोली कहीपर एवं ग्रोथ टाक आम कौन कह सेलुलर बिकज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल रे ग्रोथ था संभव ओके देन ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस ओके ये जो डेवलपमेंट प्रोसेसटा तुमको कहूँ यहाँ ह्यूज प्रोसेस यहाँ गोटे होल प्रोसेस तारी भितर ग्रोथटा अच्छी ओके मीन्स इफ इट इज द डेवलपमेंट इज ए होल प्रोसेस इनसाइड द होल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ एक्जिस्ट तारी भितर गोटे छोटिया पार्ट इट इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सी कौच नेक्स्ट रे डेवलपमेंट इज ए वाइडर एंड कम्प्रिहेंसिव टर्म यहाँ बहुत गोटे वाइडर टर्म यहाँ गोटे होल प्रोसेस ओके देन ग्रोथ मे बी रेफर्ड टू describe the changes in particular aspect of the body and behavior of the organism ये गोटे context okay for the growth okay this is growth and this is development okay and development describe the changes in the organism as a whole ये गोटे पार्ट को नहीं जाऊँगी एवं ये गोटे organisms रो entire पार्ट को नहीं जाऊँगी describe करने ओके so dear students here another thing we have to know about it ये भी क्वेश्चन डे आसे हाउ डज कंसेप्शन अकर्स तो ये आम मन रखा बायोलॉजिकली कंसेप्शन इज द मूवमेंट व्हेन ए स्पर्म सेल फ्रॉम ए मेल रिचेस द ओव्यूम और एग फ्रॉम ए फीमेल जदि आम बायोलॉजिकली कहवा जो कंसेप्शन केमतिया हुए ना जिते बड़े गोटे स्पर्म सेल जोटा कि मेल पाखरु आसे सी जदि गोटे फीमेल रो सेल जोटा कि ओव्यूम बोलिक आम कहूँ जदि कौन करुच्ची ब्रीच करुच्ची ओके सेटा को आम बायोलॉजिकली कंसेप्शन बोलिक कहू इट इज ए मूवमेंट ओके इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ यहाँ हूँ जीवन प्रथम स्टेज मनीषर डेवलपमेंटल प्रोसेस रे ओके जस्ट लुक एट द पिक्चर हियर ओके मुझे जूम कर दूँगी ओके लुक एट दिस पिक्चर तो यही जगह इफ इट इज ओव्यूम ओके इफ इट इज ओव्यूम ये जो सेलटा को तुम देखुच दिस इज नोन एज ओव्यूम एंड दिस इज द फीमेल सेल एंड दिस वन दिस इज कॉल्ड व्हाट दिस इज नोन एज स्पर्म ओके जिते बड़े ये स्पर्मटा ओव्यूम भीतर को पशि जाए यहाँ गोटे मूवमेंट एमतिया मूवमेंट से मूवमेंटा कंसेप्शन बोलिक कह जाए सिंपल इन बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ओके ओके तो यहाँ केमितिया हुए क्वेश्चन भी पड़े हाउ डज कंसेप्शन अकर्स तो बुझी नबा आमे ओके In each menstrual cycle, in about 28 days, the female sex gland called ovary ripen only one ovum. This is called ovulation process. Okay. In every menstrual cycle of a female, कौन हुए ना within the 28 days there are two ovaries are there. Okay. दुईटा ओभारी जड़े लेडीज पाखे थाए ओके एवं से दीटा ओभारी भितर गोटे ओभारी कौन करे ना गोटे राइपेन ओव्यूमटे रिलीज करे इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज ओके ये जो प्रोसेसटा हुए ताकू कहा जाए ओव्यूलेशन प्रोसेस बोलिक कहा जाए ओके दिस इज आल्सो नोन एज ओव्यूलेशन प्रोसेस तो ओव्यूलेशन प्रोसेस हला परे कौन होची ना सी कहूँ जे ये ओव्यूलेशन प्रोसेस यूजुअली अकर्स ऑन द 11th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओके मेंस्ट्रुअल साइकिल रो 11th नंबर डे रे ओव्यूलेशन प्रोसेसटा हुए एंड ऑल्दो दिस में वेरी फ्रॉम 5 to 23 days टू वुमेन इटा वुमेन टू वुमेन भेरी करि थाए कहार 5 आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल 5th डे रे भी हुए कहार 23 दिन पर्यंत भी कंटिन्यू करे ओके 23 दिन परे मध्य हेई थाए ओके and this is the structure just look at this picture these are two ovaries are there just I am zooming it okay
just look at एठी से कहूची okay this is this one ovary and another ovary both side रे अछि तो ये कौन हुए every menstrual cycle of 28 days रे either एई पार्ट रो किंबा एई पार्ट रो कौन सी गोटे ओव्यूम टे राइपेन ओव्यूम टे रिलीज हो जाए ओके एंड इट पासेस एटा फेलोपियन ट्यूब दिस वन आल्सो फेलोपियन ट्यूब तो एई ओभारी रो दिस इज द ओभारी एंड एई टू राइपेन ओव्यूम टा रिलीज हेकरी कोठी के जाए टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब ओके then okay again just this is the fallopian tube okay a2 this is ovary then also ovary okay these are two ovaries are there this is the one ovary and another ovary okay and this either this side or this side any one side release one ovum ripen ovum which just passes towards the fallopian tube okay after the ovulation process of the female the matured ovum comes to the open end of the fallopian tube okay जते बेले ओव्यूलेशन प्रोसेस टा कंप्लीट हो जाए कंप्लीट हो सारिला परे कोन होउची ना सीए कहूची जे आफ्टर मींस ओव्यूलेशन प्रोसेस मींस व्हाट ये जो ओव्यूम टा राइपेन ओव्यूम टा रिलीज हला परे ओव्यूलेशन प्रोसेस सरी गला तो एटा हो सारिला परे ये कोन हुए ना एठीर ओपन एंड फेलोपियन ट्यूब रो ओपन एंड को पळे आसे ओके क्लियर आसिला परे कोन हुए ना how long the ovum remains in the fallopian tube varies among the woman to woman माने सेटा केते दिन रहिबो से fallopian tube रे आइदर दिने रहि पारे 2 दिन रहि पारे 7 दिन पर्यंत एटा रहि पारे किंतु इट इज varies from woman to woman okay then at the same time जते बेले ई ओव्यूम टा राइपेन ओव्यूम टा फेलोपियन ट्यूब रो ओपन एंड रे हियर एंड देयर मूव करूथिबो ओके एट द सेम टाइम इफ देयर इज ए फिजिकल यूनियन बिटवीन व्हाट मेल एंड फीमेल ए नंबर ऑफ व्हाट जस्ट दिस इज द इंटरेक्शन पार्ट एंड हियर एटी कोन हबो जस्ट थिंक दैट दीज आर द स्पर्म एंड गोइंग टुवर्ड्स टू इंटरेक्ट विथ ओव्यूम तो एई जिनिसटा हला परे कोन हबो जदी एई दुइटा भितरे गुटे यूनियन क्रिएट हला okay just you think that this sperm penetrate inside just I am doing the zoom here okay just 1 minute okay just look at this okay these are some little sperms are there which are just going okay these are some sperms penetrated at the time of physical union and they are going towards the what fallopian tube to enter inside the ovum okay तो ये स्पर्म गुड़ा को जाउचंती गला परे समानकर काम होची समस्त चेष्टा करिवे ए जो ओव्यूम टा अछि राइपेन ओव्यूम ता भितर एंट्री करबा पई ओके then the sperms are attracted just look at here again okay so many sperms are there बहुत गुड़े सब स्पर्म अट्राक्टेड होकर जाउचंती फेलोपियन ट्यूब भितर एवं द स्पर्म्स आर अट्राक्टेड टुवर्ड्स द ओव्यूम एंड ओनली वन स्पर्म पेनिट्रेट इनटू द आउटर सरफेस ऑफ द ओव्यूम मात्र गोटिए ओव्यूम केवल एटा देख एटा ये गोटिए ओव्यूम भितर मात्र केवल गोटिए स्पर्म ही पेनिट्रेट हबो एवं पेनिट्रेट हो सारा पर ये गोटे रिएक्शन हो एमितिया रिएक्शन देयर विल बी ए लेयर आउ अन्य कोनोसी स्पर्म ता भितर को एंट्री करि परिबे ना okay so the sperms are attracted towards the ovum and only one sperm penetrate into the outer surface of the ovum then after fertilization or conception occurs जते बेले एटा प्रवेश करि गला ई स्पर्म टा कहा भितर ना inside the ovum भितर तो ये जो मूवमेंट है आफ्टर दैट मूवमेंट कन्सेप्शन अकर्स ओके तो कहीं कि ना यहाँ बर्तमान गोटे फर्टिलाइज एग सेल जोटा कि आम कहूँ बा जाइगोट बोलिक आम कहूँ ये जाइगोटा क्रिएट हो गला दिस इज नोन एज कन्सेप्शन इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज ए प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कन्सेप्शन ओके कन्सेप्शन प्रोसेस इज ऑल्सो अदरवाइज नोन एज व्हाट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स बुझीला ओके
सो आज डियर स्टूडेंट्स एतिकी थाउ नेक्स्ट पुणी देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आम डिस्कस करवा ओके डेवलपमेंट इन लाइफ स्पान पर्सपेक्टिव नेक्स्ट वीडियो आम जानिबा से विषय ओके आज एतिकी थैंक यू फॉर वाचिंग।